Good morning, and I'm so glad to see all of you. Welcome, and this is the third lecture in this series. The first lecture, which was the mindset of entrepreneur. The second lecture was what is a startup? And the third, this one, about BMC, Business Model Canvas. Business Model Canvas. That means what you're trying to do, you are trying to put a story together, which is called business plan. And that story, you are going to go to the potential investor and VCs for funding your company. Till 2010, actually, the companies, the startups would actually go and write a business plan. And that business plan would be such a, thick 200-page thick paper, a book like this. And then that will have all the what is company about, what is the team, what they're going to do, what is the market, and all of that content of the business plan was there, and how the company plans to make money, and when the investor would be able to make money from their investment. So all of that was written in this business plan, big business plan, about 200 pages. Now, this is a very a very live document, because each day the circumstances changes, so you have to update, you have to keep on updating a business plan, or if there's a mistake you have to update it, and it is a very cumbersome task to actually update this kind of document. Thanks to Dr. Steve Blank and a student who was doing the PhD. And that student did the PhD that how do you represent this business plan in one sheet of paper? And he came up with this idea called BMC, Business Model Canvas, at Stanford University. And so they came up with, and so all that, it is on one page. It is on one page, and it has 9 blocks in it. And it shows how the startup is going to make money. That's what it is. We know in the last class, last presentation, what is the purpose of startup? The purpose of startup is to look for a business model which is repeatable, which is scalable, and which is profitable. That's what you do. Once you have gone through that, what is startup? And now we are going to talk about the business model canvas. How do you communicate? What is the mode of communication so that the potential investor, potential VC, they can come, they can understand it, and in a very quick, very fast way, and then they will be able to invest in this if they are interested. Now, also another thing is that business plan, whenever you have to, if you're a startup and you're going to raise money, you'll be going to, like, maybe 20, 30, 40, maybe 100 different potential investor before you really find one who is ready to invest. That happens, right? That will happen. So you have to, your presentation must be very, very crisp. Plus, you should be able to give your idea in less than 2 minutes. In 60 seconds, you should be able to tell what your company is about. And then another 60 seconds to follow. And now it has become an industry standard. And all the startup, if you go, they will ask you, oh, what is your BMC? And then what you show this business model canvas. So it has 3 components. Business model canvas, that is a business model which is repeatable, scalable, and profitable. This class, this series is dedicated to Mr. Vinod Rao. Mr. Vinod Rao, who has been our mentor,
who has helped some of the companies, and also one of the startup which was fortunate to get its help progressing, and it's called Punjab Renewable in the solar appliances. That's what they are doing. Vinod Rao, he had a vast experience with the SpaceX and also with Tesla. He has been in Silicon Valley for almost like 45 years now. Okay, this class is taught Professor Raj Jaswa. Professor Raj Jaswa he is an entrepreneur. He's a serial entrepreneur. He actually did his first company, which was called OPTI, in the semiconductor. He started working after graduation. He started working for Intel, and he worked at Intel for 8 years, 9 years. And that's where he got his skill. He learned the skill, and then after that, he joined. He made his own startup, which is Opti. After that, Selectica. Selectica was a company which is, I think, the one of the first company in the AI to go public. That was in 1996, and it went public for with a valuation of almost $5 billion. He did two more companies, and very good professor. He is a professor at IIT Bombay, IIT Gandhinagar, at NITs also. Then we have Dr. Prakash Kumar, head of the Department of Production and Industrial Engineering. He is the heartbeat of this class, actually. He's the one who has been for last 7 years. He's been supporting this program, and he of course he takes two classes also, and then we have Professor Suresh Roy, a serial entrepreneur, an expert in the new product introduction. We have invited guest entrepreneur speakers who will be talking to you. Very thankful to Ria Arora of Babson College, Boston, and Rana Arora Harker School for drawings. Thank you very much. And I'm Ramesh Yadav. I'm adjunct professor of entrepreneurship at JUT and BIT Sindri. I'm a graduate from BIT Sindri. I came to Silicon Valley in California in 1973, just after graduation, and then did my master's. After that, I worked for a company called Memorex, where I learned all my skills. I worked there for 8 years, and then after that, I founded my first company and became an entrepreneur. After first company, then moved on to find the second company, which was a Comport Corporation, which was funded by Samsung Electronics. Late 1999, we found a third company, which is in the biometric area, which is the fingerprint on the flexible substrate. And the technology was acquired by Lenovo, and I retired in 2015. But after that, I put my focus on the entrepreneurship, teaching, sharing the knowledge which I have gained, and my goal is to make sure that the entrepreneurship thrives, bubbles in the state of Jharkhand and in your institute. Every class, every lecture, actually, before you will get this presentation 2 weeks, the video and also this presentation you will get. So go through this presentation. So this is what is the business model canvas. Right? Business model canvas, BMC, इसके 9 component है, 9 components. So one is the value proposition. आप कस्टमर को क्या चीज दे रहे हैं जिससे कि कस्टमर समझे ओ ये मेरे लिए वैल्यूएबल है. आप क्या दे रहे हैं जो कस्टमर समझे ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. So what you have done is you have first gone to the customer. You've gone to the customer and you have tried to find out what problem customer has. What kind of problem customer has? What is customer's pain point? उसको तकलीफ क्या है जो कि सॉल्व करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है. So you had done that, and you talked to the customer, and then finally you have figured out, okay, this is the problem customer has. You come back home, and with your team, you kind of determine what solution you want to give to the customer.
तो व्हेन यू गिव दैट सॉल्यूशन टू द कस्टमर, तो कस्टमर की प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करें, तो एवरीथिंग हैज अ वैल्यू. अब जैसे यू हैव टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर द कस्टमर, एंड देन you will set the pricing of the product, right? Whatever, or service what you are providing. अब देखिए, आप जाते हैं, you go you go to the shop and you buy a soap and you pay some money to that soap, right? You pay that money because you feel that soap is giving you that service. It cleans your body, it remains fresh, and all of those things it does. So you have a value. If soap manufacturer gives you a value proposition for you, that's what it is. And then you say, okay, that value मेरे लिए इतने value create कर रही है. So you pay for that soap, certain amount, 10 rupees, 20 rupees, whatever that thing is. That is value proposition. The third thing is customer relationship. एक बार कस्टमर आपको मिल गया, आप कस्टमर ने आपका सामान खरीदा, सो अब है कि आपको दोबारा फिर उससे ऑर्डर चाहिए, तो आपको रिलेशनशिप कस्टमर से बनानी पड़ेगी. कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा. अब आप कोई चीज बाजार में खरीदने जाते हैं, और जो दुकानदार है वो आपके साथ बहुत रूडली बात करता है, आप फिर दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे. सो दैट दुकानदार हैज लॉस्ट योर बिजनेस. उसने ग्राहक संबंध नहीं किया, राइट? कस्टमर रिलेशनशिप नहीं की. सो कस्टमर रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स व्हाट गिव्स यू, मेंटेन्स योर बिजनेस, प्लस इट गेट्स यू a new business. एंड देन चैनल. चैनल का मतलब आप कस्टमर, आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब जो प्रोडक्ट है वो कैसे जाएगा, कहाँ, कैसे आप वो प्रोडक्ट पहुंचेगा आपके 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 फैक्ट्री से, आपके स्टार्टअप से, वो जो यूज करेगा, यूजर है, उसके हाथ में कैसे पहुंचेगा. हाउ इज दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. देन द नेक्स्ट इज रेवेन्यू स्ट्रीम. तो अब है कि कस्टमर ने पैसा दिया, राइट? अब जैसे आपने साबुन का एग्जांपल लें, तो आपने साबुन खरीदा, अपने घर के पास जो दुकान है उस दुकान से आपने साबुन खरीदी. अब वो पैसा जो है वो कैसे पहुंचेगा साबुन मैन्युफैक्चरर को, ये दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द रेवेन्यू स्ट्रीम. किस तरह होगा. ओके. देन दूसरा है कि की एक्टिविटीज. आपको आपको जो ये सामान बनाने के लिए जो भी आप सोचे, सर्विस के लिए या जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको. सो यू राइट दैट डाउन. दोज आर द की एक्टिविटीज. एंड देन यू से, ओके, व्हाट आर द रिसोर्सेज आई नीड. इसको बनाने के लिए, ये जो प्रोडक्ट मैंने सोचा है इसको बनाने के लिए मेरे को रिसोर्स क्या क्या जरूरत है. मेरे को, आई नीड द ह्यूमन रिसोर्सेज, आई नीड द टेक्निकल एक्सपर्ट, आई नीड सम मनी, आई नीड सम स्पेस, आई नीड अ फैक्ट्री. एंड आई नीड टू मेक पार्टनरशिप विद अदर्स टू, राइट? सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू काइंड ऑफ राइट डाउन कि इसको ये जो की रिसोर्सेज क्या क्या है. That's what it is. And then the next is पार्टनरशिप. की पार्टनरशिप. हर चीज तो आप नहीं बना सकते हैं. अब जैसे कार वाले हैं, कार वाले की कार जब बनती है, मारुति कार बनाती है, तो मारुति कार जब बनती है, तो मारुति हर कंपोनेंट वो बाहर दूसरे दूसरे सबसे खरीदती है. जैसे टायर, राइट? टायर वो कार में लगाना है तो दे बाय द टायर. सो द टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिससे कि मारुति बाई करती है, वो है पार्टनरशिप आपस में, right? Because the Maruti is dependent. The car will be made only when the tire is there, and so Maruti is dependent on that, and so you make, Maruti has made that key partners. Okay? So that's why that key partner is very very important. And then the last part, ninth one, which is the cost structure. ये आपको जानना है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना ह्यूमन रिसोर्स, लोगों में जो आपने एम्प्लॉय हायर किए उसमें कितना खर्च हो रहा है,
आपके सामान के मटेरियल में कितना खर्च हो रहा है, आपके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हो रहा है, आपकी बिल्डिंग का खर्च कितना हो रहा है, रेंट कितना आ रहा है, कितना बिजली का खर्च है, कितना पानी का खर्च है, कितने ट्रांसपोर्टेशन या एजुकेशन जो जो आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, कितना उसमें खर्च है। तो वो सब खर्च जो है वो इसमें जाएगा। क्यों ये बहुत जरूरी है कि एक एक शब्द है यूनिट इकोनॉमिक। यूनिट इकोनॉमिक, यूनिट इकोनॉमिक का मतलब हुआ कि अगर आप जैसे जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप एक बनाते हैं तो उस एक प्रोडक्ट बनाने तो उसका कितना दाम है, कितना उसमें आप, व्हाट इज हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग, यूनिट इकोनॉमिक कितना तो कितना अब 12 लेट से कि आपको 10 रुपए में खर्च हो, 10 रुपए उसको बनाने में खर्च हो रहा है, सिर्फ बनाने में, राइट। और फिर उसको भेजना है, उसको ट्रिप शिप करना है, कस्टमर के पास जाएगा, मार्केटिंग का खर्चा है, ये सब खर्चे भी उसमें वो भी ऐड हो जाएंगे। यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब, हाँ, तो एक यूनिट के लिए कितना खर्च होता है, तो सारे खर्च वो ऐड करते हैं। सो यू हैव टू नो, जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप एज अ स्टार्टअप, यू हैव टू नो व्हाट इज द यूनिट इकोनॉमिक्स, व्हाट इज दैट कॉस्ट, एक यूनिट बनाने का कितना खर्च आता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल है वो एक्चुअली। ओके, सो व्हाट आई डिड वाज, आई ऑल्सो, मैंने हिंदी में भी ये दिया है और फिर इंग्लिश में भी दिया है, ये आप लोग के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट यू कैन नो, आप देख सकते हैं कि सो दैट यू गेट फेमिलियर विद द टर्म्स। जिस लैंग्वेज में भी आपको बात करना है आप बात कर सकते हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू विल टॉक इन English. It is not important that you will talk in Hindi. You can combine, you can talk. जहां भी आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, that's what you do. Okay. So BMC, business model canvas, व्यवसाय मॉडल कैनवस, राइट। कैनवस अगेन वो ड्राइंग का जो है ना, जिसमें जिसमें आर्टिस्ट पेंटिंग जो बनाते हैं, राइट, दैट्स कैनवस, दैट्स कॉल्ड कैनवस। Okay, so a startup's objective is to find a model which is repeatable, scalable and profitable. ये जान लीजिए, ये मंत्र है, याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की बात है। कोई भी बिजनेस आप आंख बंद कीजिए, तो किसी बिजनेस को क्या आप आंख बंद करें, सोचिए ऐसे कि कैसे बिजनेस सक्सेसफुल होगा। वह बिजनेस ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया विच कैन बी रिपीटेबल, माने एक के बाद एक वो कई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के कई पीसीज आप बना सकते हैं। यू कैन मेक एग्जैक्टली जैसा पहला प्रोडक्ट बनाया, पहला सैंपल बना, वैसे ही दूसरा बनता है, वैसा ही तीसरा बनता है, एग्जैक्टली द परफॉर्मेंस, द डायमेंशंस, all the things are exactly same, tolerances, they are exactly the same, right? So and then repeatable and then scalable. अब आपके अब स्केलेबल बनाने के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। All your expense would be maybe in the material cost, because raw material थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, right? That will be there. फैक्ट्री में थोड़ा सा आपको असेंबली टूल्स इनकी जरूरत पड़ेगी, वहां ज्यादा खर्च होगा, थोड़े से एम्प्लॉय थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन डिजाइन एक्सपेंस तो नहीं है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, आपने कर दिया। सो द रिपीटेबल, स्केलेबल, प्रॉफिटेबल, that's what your goal is. That was, as a startup, that's what your goal is. Okay, what is business? क्योंकि ये सब बिजनेस हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं बिजनेस, अगेन वी वांट टू, बिकॉज यू वांट टू क्रिएट वेल्थ ना। स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप करते हैं, यू बिकम स्टार्टअप, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अपनी कंपनी आप खुद बनाते हैं। सो द चांसेस आर यू विल बी एम्प्लॉइंग, द डेटा इज दैट एक स्टार्टअप 40 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, एक स्टार्टअप 40 लोगों को। अब समझिए, 40 लोगों को, इंडिविजुअल को, 40 एम्प्लॉय को देता है, और हर एम्प्लॉय के घर में अगर 4 आदमी है, सो यू कैन इमेजिन एक स्टार्टअप कितने लोगों को सपोर्ट करता है।
right? So that is what is important. So startup जो है वो that provides you become a job provider instead of job seeker. Okay, having said that, yeah, you can also become what is called intrapreneur. Intrapreneur is कि जैसे आप सोचेंगे नहीं मैं आई डोंट वांट टू become an entrepreneur. I just want to, I want to, I know I can, I want to use my technical knowledge to do the things for others. And you will start working somewhere, right? और लेकिन ये जो भी इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे, ये जो सीखेंगे इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने जहां आप काम कर रहे हैं, you will be able to rise and rise. You know, the person who becomes the top, like example I will give you, हमारे Steel Authority of India Limited, graduate of Jharkhand University. He is the chairman and the managing director. Professor Amrindu Prakash. He is a he is an entrepreneur. तो या तो आप खुद अपना बिजनेस करते हैं, दैट बिकम्स यू बिकम एंटरप्रेन्योर, और यू बिकम एन इंट्राप्रेन्योर, ताकि आप करें और आप किसी कंपनी में काम करेंगे और वहां एग्जैक्टली आप जो भी स्किल्स आपने सीखी है उसी स्किल को लगाएंगे एंड यू विल मेक दैट कंपनी सक्सेसफुल। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसा संगठन है जो वैल्यू बनाता है, सेम थिंग, राइट? रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट वैल्यू, इट क्रिएट्स वैल्यू फॉर द कस्टमर एंड देन उसी वैल्यू को वो सामान देता है उससे उसका उसको प्रॉफिट कमाता है, राइट? दैट्स व्हाट इट डज। ओके, चार जो एरिया हैं बिजनेस के, एक है कस्टमर, कस्टमर होना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों में कस्टमर इज द की पर्सन, कस्टमर सबसे जरूरी है। और फिर व्हाट यू आर ऑफरिंग, व्हाट इज द वैल्यू यू आर गिविंग, what are you doing, what service you are providing, what are you are you serving a painkiller or are you serving a value added, जो भी आप कर रहे हैं। और what is your infrastructure, is your infrastructure there, आपकी फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि आप वो प्रोडक्ट या सर्विस जो बना रहे हैं उसको आप ऑफर कर सकें, राइट? दैट्स एंड देन ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल वायबिलिटी, वित्तीय, आपके फाइनेंस के, आपके पास इनफ पैसा है या रिसोर्सेज है उस पैसे के, ताकि आप अपना आप कस्टमर को सपोर्ट कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। बिजनेस मॉडल शोज द लॉजिक ऑफ हाउ अ कंपनी इंटेंड्स टू मेक मनी। बिजनेस मॉडल का बस यही है कि कंपनी कैसे पैसा बनाएगी, दैट इज द डिस्क्रिप्शन। सो व्यवसाय मॉडल यह तर्क दिखाता है कि कोई कंपनी कैसे पैसा कमाना चाहती है, और ये सब संगठनात्मक संरचनाओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों के माध्यम से, ऑल द प्रोसेसेस, rules, procedures, processes and procedures, they try to implement. The investor looks at, oh, what are those processes and procedures? Are they really the right one? Are they really, can this company make money? So that's why you have to look at grahak, value proposition, that is prastav, what is the infrastructure, बुनियादी ढांचा, and वित्तीय व्यवहार्यता, फाइनेंशियल वायबिलिटी आपकी कैसी। दिस इज व्हाट कॉल कंसिस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस ऐसे बनता है, ये सब चीजें आप जानिए। और मैं चाहता हूं कि आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, और अपने आप ही आपको ये आइडिया सब आ जाएगा। बड़ा सिंपल बात है, आप देखते हैं, आपके माता जी पिताजी हैं, हाँ, घर चल रहा है, दैट इज लाइक अ बिजनेस, राइट? कहीं से इनकम आ रही है, इनकम कहाँ से आ रही है? आपके पापा ला रहे हैं, मम्मी ला रही है, आप वो इनकम ला रही है, right? वो क्या कर रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? वो आप लोगों के लिए दे कैरी योर एजुकेशन, दे कैरी योर लिविंग एक्सपेंसेस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, आप लोग सबको सफल बनाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, सो इट इज लाइक अ
इट इज लाइक अ बिजनेस। ओके, तो बिजनेस मॉडल एक व्यवसाय मॉडल कंपनी के प्रमुख घटकों के बीच के प्रवाह का वर्णन करता है। पर कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं, वो कैसे एक दूसरे से काम करते हैं, कौन क्या करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ऑल दोज आर डिफाइंड देयर। एंड देन the top things which are there, which are value proposition, we talked about it, right? And we talked about customer segment, and then we talked about distribution channel. तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप विच इज बीएमसी। बीएमसी बिजनेस मॉडल कन्वेंस के जो 9 कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है उसको देखते हैं। तो वैलिडेटेड बिजनेस मॉडल क्या हम लोग देख रहे हैं, विच इज रिपीटेबल, स्केलेबल, प्रॉफिटेबल। सबसे पहले तो ये बतलाता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी चाहे डेवलपमेंट, डिजाइन, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, राइट, ऑल एचआर, ये सब डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट सब हैं, ये आपस में कैसे काम करते हैं, हाउ द मनी इज मेड, फाइनेंस कौन है, राइट, दैट्स अ सो अ बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स अ फ्लो। आपस में जो फ्लो जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, हाउ द कंपनी इंटेंड्स टू मेक मनी, दैट्स द बॉटम लाइन, कैसे कंपनी पैसा बनाएगी। तो 9 जो कंपोनेंट है, तो फर्स्ट वन इज द वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन, विल टॉक मोर अबाउट इट। वैल्यू प्रोपोजिशन में आपने क्या किया कि आप यू वेंट टू कस्टमर, यू फाउंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हाट पेन पॉइंट कस्टमर हैज, एंड यू गो ahead and provide a solution to that, right? That's what you do. Customer buys your solution, okay, and then so that's called customer क्यों पैसा देगा, right? So that is the वो value proposition आपने दी है कि कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, okay? So कस्टमर को उसको उस सेवा का से वो जो उत्पाद आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उससे कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है, that's what you want to do. And then customer segment, आप कौन आपका कस्टमर है, who you are selling, who is the customer, what kind of customer, जैसे आपका जो जो कस्टमर है वो कैसा होगा, right? That's what you kind of look into it. Okay, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपकी कैसी होगी, कैसे आप उसको बांटेंगे, right? फिर उसके बाद आप कस्टमर रिलेशनशिप, आपने कस्टमर एक कस्टमर बना लिया, अब पहली बार उसने ऑर्डर दे दिया, अब क्या करेंगे कि वो कस्टमर आपको बार बार ऑर्डर दे, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट, जैसे और नए नए कस्टमर कैसे आएंगे, और जो कस्टमर है वो कैसे आपके लिए आपके लिए आपको प्रमोट करेगा, गिव अ गुड रेफरेंस, दैट्स व्हाट इट इज। एंड देन रेवेन्यू स्ट्रीम, आपका जो हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी, पैसा जो आपने बेचा, दुकान कस्टमर ने आपको आपका सामान खरीदा, और जब कस्टमर ने सामान खरीदा और उसने पैसा दिया, तो वो पैसा आपके पास कैसे आएगा। अब जैसे साबुन साबुन तो बनती है कहीं और प्रांत में, राइट, आपने आपने वो साबुन अपनी दुकान के अपने घर के पास दुकान से खरीदी, जब आपने खरीदी वो साबुन, तो वो पैसा जो है जो आपने दिया वो कैसे वो फैक्ट्री में जाएगा, how that money will flow, how many changes, hence it will change, right? That's what you have to think. Then of course, number 6 is व्यवसाय resources, resources needed, आपको अपना करने के लिए क्या क्या रिसोर्स जरूरत है, जैसे श्योर आपको बिल्डिंग की जरूरत है, आपको टूल्स की जरूरत है, आपको सामान की जरूरत है, रॉ मटेरियल खरीदना उसकी जरूरत है, राइट, आपको मैन पावर की जरूरत है, टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको जरूरत है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर, you need all of that. And so you decide, okay, what are the resources which are needed to make the business model possible. फिर उसके बाद एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटी है विच आर इंपॉर्टेंट, विच यू नीड टू मेक इट कंप्लीटेड, टास्क आइटम, क्या क्या टास्क करने हैं आपको, दैट्स व्हाट इट इज द एक्टिविटीज, राइट। तो वो है। फिर उसके बाद
उसके बाद है कि आपके कौन से पार्टनर है। आप आउटसोर्स करेंगे थोड़ा सा सामान, है, क्योंकि हर चीज तो आपके लिए बनाना संभव नहीं हो सकता है। यू विल आई आउटसोर्स, जैसे जैसा मैंने एग्जांपल बताया, जैसे मारुति does not manufacture the tires, they outsource to somebody else and they make it and they buy the tires from them, right? So that's what, वो उस तरह के पार्टनर कौन से, बैंक विल बी योर वन ऑफ द पार्टनर्स, राइट? बिकॉज योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक विल बी योर पार्टनर। जो आपके सब कंपोनेंट्स अगर बना रहा है, आपकी जो बाकी जो कंपोनेंट है वो बना रहा है जो बाहर से, तो they will become like your partners. The last is cost structure, कि हर चीज में आपके क्या क्या कॉस्ट आ रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस सर्विस को देने के लिए आपकी क्या कॉस्ट आ रही है। यू हैव टू डिटरमिन दैट। रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट यूनिट कॉस्ट। आपको ये करना है कि हर एक प्रोडक्ट, अगर आप 1000 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सैंपल बनाने में आपका कितना खर्च हो रहा है। अगर आप एक साथ 1000 बनाते हैं तो कितना खर्च होता है, आप एक साथ 100 बनाते हैं तो आपको कितना खर्च होता है। दैट इज कॉल्ड द यूनिट इकोनॉमिक्स। एक बनाने में कितना खर्च होता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हियर इज द बिजनेस मॉडल कैनवस, जिसके 9 कंपोनेंट है, राइट? वी टॉक अबाउट वैल्यू proposition, we talked about customer segment, we talked about a customer relationship, we talked about channel, we talked about the revenue stream, and then on this side, so ये जो 5 जो है, 1 2 3 4 और ये 5, this all creates कि पैसा कहाँ से आए, कैसे आएगा। This is all creativity, right? For the money. That's where the money. And this here, this part, key activities, key resources, key partners, and cost structure. यहाँ आप पैसा खर्च कर रहे हैं। Okay, so that's what this chart does. और हमारा जो मोटो है, to fill in each one of these blocks, we should fill it in. So let's go a little bit more detail in each one of these tasks. Okay. So value proposition. Now you have remember in the if you remember the 14 items which we talked about in last 2 classes, both of them, कि क्या है जो स्टार्टअप को, जो एंटरप्रेन्योर को मस्ट मैनिफेस्टो जो है वो क्या है। तो एक था कि आपको कोई भी जो फैक्ट्स है वो आपके रूम में नहीं है। यू हैव टू गो आउट टू द कस्टमर। यू कैनॉट से कि ओ यू कैनॉट डू जस्ट द रिसर्च ऑन द इंटरनेट एंड गो आउट देयर। आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा आपकी क्या तकलीफ है। क्या आपकी रिजेक्ट रेट बहुत ज्यादा है? क्या आपका मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है? क्या आपकी असेंबली में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है? क्या आपका डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है? कितनी बातें हैं, राइट? और क्या आपके बाकी सब वेंडर्स जो हैं वो आपको ठीक तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? और आप नया डिजाइन कर रहे हैं एंड यू नो देयर इज अ पेन देयर, वो नए नए डिजाइन में बहुत डिफिकल्टी आ रही है। सो देयर इज अ पेन, सो कस्टमर पेन, you have to determine what is customer's pain, and you have to determine what is customer's gain by implementing your solution, your product, your value proposition. Okay, so you give the value proposition. So तो ये VP वैल्यू प्रोपोजिशन, ये उत्पादों और सेवाओं के उस बंडल का वर्णन करता है जो किसी विशिष्ट ग्राहक खंड के लिए वैल्यू बनाते हैं। ओके, दैट्स व्हाट इट इज। विशिष्ट ग्राहक फंड के लिए वैल्यू बनाते हैं। ओके, then you say the it seeks, क्या करता है? It seeks to solve customer problem and satisfies customer need with value proposition। कस्टमर की प्रॉब्लम है,
उसी को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड आप यू ऑलरेडी नो कस्टमर प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव विजिटेड द कस्टमर, यू हैव डन द कस्टमर वैलिडेशन, you have done the and talked to the customer and shown to the customer what you are. First of all, you explain to the customer that what is the problem you think based on what he told you, customer told you, you tell them this is the problem, and then you work on the solution and say this is the solution I'm giving, and this will help you to do, uh, will reduce your pain, will reduce your cost, and you'll be able to make more money, and so on and forth. Okay. The third is, okay, कि value are quantitative or qualitative. एक तो वैल्यू है कि बोलते हैं क्या द वैल्यू इज मेड कि अ, कि इतना सामान लगा, इतना उसमें वेट है, and उस हिसाब से आप खर्च किए, उसी के हिसाब से आप वैल्यू बनाए। और कि दूसरा है कि वैल्यू जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस से वैल्यू है। लाइक सोप, व्हाई वन सोप इज सो एक्सपेंसिव देन द अदर सोप? It is not that it costs a lot of material there. No. Raw material is probably costing the same. But they're adding some little things, very little things. Maybe the fragrance, maybe whatever they add. And that makes you feel good. And so the customer experience goes good. And when that goes good, there's a value to that. So value proposition के कुछ तत्व हैं जो कि जानना जरूरी है। एक तो क्या ये नई चीज है, right? That's what you look for. Oh, क्या ये नई है? Then you can ask value proposition, तो ज्यादा कर सकते हैं। Then performance, कैसा काम करता है ये? Is it faster? Is it more accurate? All of those things. And then customization, आपके जो uses है, it exactly fits your requirement and it does the work. So that's the first element. The second is, एक कंपनी का नाम है सिंटेल, और उसका लोगो है कंसिडर इट डन। उनका लोगो ही है कंसिडर इट डन। क्या मतलब है? कि कि इसे पूरा हुआ समझे, इसे पूरा हुआ समझे। ये वो चीज नहीं है जैसे कि यहाँ लोग कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, नहीं नहीं, दैट इज नॉट, हो जाएगा इज नॉट द टर्म फॉर दिस। नो, दिस इज इसे पूरा हुआ समझे। देखिए वर्ड में कितना डिफरेंस है, हो जाएगा या इसे पूरा हुआ समझे। See that same, कितना, the meaning is so much different. Completeness. So you have to अपनी कंपनी में जब जब आप कहें वैल्यू प्रोपोजिशन जब बतलाएंगे, you have to tell, you have to make it कि you use the proper word which kind of a touch the nerve of the customer, कि उसके जो दर्द है वहीं जाके वो ठीक लग रहा है और उसका वो दर्द का इलाज कर रहा है। ओके। एंड देन ऑल्सो दी, जैसे डिजाइन, डिजाइन कैसा है? ब्रांड स्टेटस, अगर आपका ब्रांड है, एवरीबडी वांट्स टू बाय नाइकी शूज, राइट? एवरीबडी वांट्स टू बाय, एवरीबडी वांट्स टू बाय एप्पल iPhone, right? This is a, because that is the brand status, right? अब प्राइस उसी हिसाब से तो प्राइस बनता है। अब जो स्मार्टफोन, the smartphone are almost the same price, cost is same, but Apple charges 5 times, 6 times more than the other phones. So for other manufacturers, right? The difference is not much, but still they charge so much. So it is the brand status. Then the production, accessibility, कहाँ मिल रहा है, and then convenience and usability, उपयोगिता, सुविधा, ये सब चीजें देखते हैं। और फिर एक्सपीरियंस, अनुभव, भावनात्मक, सम्मान, माहौल, मजा, ये सब चीजें हैं। निकटतम,
तो ये आप देखते हैं कि हाउ इट गिव्स, ये दीज आर द फीलिंग्स, इमोशनल। तो वन वैल्यू यू सेलेक्ट टू डोमिनेट द वैल्यू प्रोपोजिशन, एक वैल्यू कि हम सबसे अच्छा ये करते हैं। एंड सेकेंड कि हम किस में अच्छे हैं, व्हाट मेक्स अस डिफरेंशिएट देन द अदर। और बाकी जो है तीन चीजें जो हैं, ये इंडस्ट्री नॉर्म, दे मीट इंडस्ट्री नॉर्म। वैल्यू प्रोपोजिशन पर हावी होने के लिए एक मूल्य, अंतर करने के लिए दूसरा, और शेष तीन उद्योग मानक को पूरा करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। And so here you can look at this chart, value proposition chart. We have gone through the value proposition, one of the 9 blocks of business model canvas, BMC, most important one. So the value proposition, this chart actually combines everything what you saw in the previous 10 slides. The value proposition is what you are providing to customer. And how do you determine a value proposition? You determine a value proposition by going and talking to the customer, listening to the customer, listening to what customer wants. Customer may need a gain creator. A gain creator means customer already have a business which is running, and he wants to increase that business. He wants to increase the production from 100 units a month to 1,000 units a month. That is a labh nirmata, gain creator, that customer may want to do. That's one thing. Or customers say, oh, I want to increase my market. So right now, customer may be only doing his services, providing services and product in just one state, in just the state of Jharkhand. But now customer wants, I want to go to Bihar, I want to go to Maharashtra, I want to go to Punjab, I want to go to Assam, and I want to go to Uttar Pradesh, and all those places, Delhi, all those places customer now wants to go. So because that will give customer a more customer, that will give customer the more market area, more market segment. That's what he wants. So that is one part, gain creator. The second part, which the customer problem is, could be, is the pain. Customer is having a pain, and the pain could be that the cost of material is too high. Pain could be that efficiency of the services or product which you are supplying to the customer is not right. You are still losing. Your reject rate of the product is too much. So those are the kind of things. The cost is too high, the reject rate is too much. You are not able to produce too many of the products because of the process, or because of the material cost. And so those are the pain relief, pain which are they want the relief from that pain. उस दर्द से, उस परेशानी से कस्टमर निवारक होना चाहता है। तो ये दो चीजें हैं। एक तो है कि गेन क्रिएटर, कि कस्टमर वांट्स टू एक्सपैंड, कस्टमर वांट्स टू मेक मोर मनी, मोर प्रॉफिटेबल। और दूसरा है कस्टमर की जो प्रॉब्लम है, जो कि जिससे उसको नुकसान हो रहा है, तो उससे उसको कस्टमर इज लुकिंग फॉर दैट सोल्यूशन। कस्टमर उसका निवारण चाहता है, क्या कर दे। तो आप हैं, अब आपकी स्टार्टअप है, यू वेंट टू द कस्टमर एंड यू अंडरस्टूड द कस्टमर प्रॉब्लम, एंड देन यू come up with a solution, and you come up with a product and services for the customer.
so that customer can gain even लाभ निर्माता हो जो solution हो उससे परेशानी निवारक हो सके वो आप कर रहे हैं. This block here consists of gain creator and the parishani nivarak. These are the this is one side of these are the customer problem you define, and the product services you also define. This is what you give. So gain creator और पेन रिलीवर मिला के और फिर उसके बाद कस्टमर के लिए आप प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप करते हैं. And now you go back to the customer. You say, okay, look at this here. These chart we will look at. Okay, what's happening here? But we are providing, we have already given the product or the services we have defined, and we are going to go to the customer. And we say, oh, gain a creator, आपको लाभ और करना है, you are expanding, जो आपने problem बतलाई थी, this is the solution we want to provide. This is what we are doing. So customer looks at that, customer will have more profitable product, and customer will be so happy. एंड देन जो कस्टमर को बतलाया था, कस्टमर ने जो आपको बतलाया था क्या क्या डिफिकल्टी है उसके साथ, क्या क्या तकलीफ है, और आपने उस तकलीफ को आपने कम कर दिया, आपने परेशानी जो है वो निवारक कर दी. वो सो कस्टमर की और परेशानी वो बची नहीं. You can see that X here over the sad face. No, customer is not sad anymore. He is happy. And then जो यू हैव डिफाइंड, जो कस्टमर जो जॉब चाह रहा था, क्या जॉब थी कस्टमर की? एक जॉब तो है कि ही वांट टू एक्सपैंड हिज कंपनी, he want to expand and make more profit in the company. That is one part. दूसरी जॉब थी कि जो परेशानियां थी उसको खत्म करना है. तो ये दो काम थे जो कि आपने डिफाइन किए when you met the customer and you provide the customer with the solution. And that is the value proposition you are giving. आप कह रहे हैं कि अगर आप ये इंप्लीमेंट करोगे तो आपको यहां लाभ होगा क्योंकि आप एक्सपेंड कर रहे हैं, और आपकी परेशानियां कम होगी तो आपके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा, आपके प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व कर दी है, और you will make more profit. All of these things, whether it's a gain or whether it's a pain, when you give a solution, customer is making money. That is a value to the customer. There is a value which customer is getting, and that's why it is called value proposition. And you are proposing the solution. You are proposing the solution, and in the solution you are saying, customer, your customer is creating so much value. So value proposition. Thank you so much. We will go with the next part of the BMC, which will be in our next class. Thank you and have a wonderful day.